Welcome to all in the today's session of value added certificate course which is being organized by Department of Chemistry, Pandit NRS Government College Rohtak. Today we will discuss about the drug free India. It is a very current topic. Everyone is affected with that particular problem. When you listen about the term that is the drug, what it means? Kef. What it means? Different type of drug means morphine, codeine, afim, ganja, chers. Means these all name came in your mind. But in actually, drugs are of two types. Drugs may act as the medicine or it may act as the poison. If any of the chemical, if it is taken as per the doctor prescription, then it will act as a medicine. But if you take it against the doctor prescription, take in higher amount, then it is the poison, means then it is very harmful for us. And commonly the poison, for the poison word we generally use the term drug. So in generally when we are calling that is taking a drug. So drug, in term of drug, many people's taking the cough syrup in the form of the drug because now they become addict of that. They cannot live without that particular drug. There is something sanitation occurs in their body. Their body wants that particular drug. Otherwise, it looks like that they will die at once. They can do anything. They can break anything at home, at any workplace also. If you will not give that particular drug to them at particular that time. So our today's lecture is on that particular topic, that is the drug. Not only our country, that is the India, the many other countries also been addicted with that particular term, that is the drug. Our we It's our moral duty to protect our youth from drug addiction, and that is the term here, that is the drug free nation. And here our country is the India, so we are saying here the drug free India. So in today's session we will discuss all about the drug free India. Okay, how can we make our India drug free? So first of all, we will discuss about all these things. We are well aware in whole of the world there are different type of zones. There are two major drug producing zones, that is the golden triangle and the golden crescent. These are the two main drug producing zones, and these two zones are continuously being spreading their tentacles in all the countries. They are affecting all the countries in one or the other way. So these two drug producing zones, that is the golden triangle and the golden crescent, these are the golden crescent area includes the Pakistan, Afghanistan and the Iran one, while the golden triangle area comprises the Thailand, Myanmar, Vietnam and Laos. They are affecting all the countries. They are spreading their tentacles. They are spreading their branches in different countries. They are affecting the youths. Affecting youths means they are affecting the building form of any of the nation, because if if our youth are healthy, they are being protected from that particular drug addiction, then that particular country can go too high up in the whole universe. Thus, in our country, that is the India, the states contributing the largest number of cannabis users were UP, that is the Uttar Pradesh, 20.8%, followed by Bihar, Kerala, West Bengal, and the Maharashtra. In today's world, that is the world of technology, as the technology has evolved,
and that particular technology brought many changes in our lives. Due to the advancement at the workplaces, at the industrial level, due to the incoming of the Western culture in our society, what happens? The alcoholism and the drug abuse, now that becomes the major social concern. Alcoholism and the drug abuse affecting our whole of the society to a larger extent, and thus finally whole impact will goes to our nation development. Now the entire world is affected with that the problem of drug addiction or the alcoholism addiction in one form or the other form. The society pays a significant cost due to people abusing substances, mainly the drugs and the alcohols. Whole of the society get affected from ground level, means from their home to the society to the workplace, everywhere the whole of the society get affected. The pressure of the modern society creates a challenge for the youth due to, as already told you, there are two zones which are continuously being spreading their tentacles in the different countries. As our youth easily get entangled in these tentacles spreading by these different two zones, and thus it becomes a very alert to whole of the globe due to the falling of our youth in that particular addiction traps. The drug thrills but kills. Once any of the person, whether it is the smaller one, youth one, or the old age person, if initially if it will take the drugs, it causes something new in their body. It looks like that they assume that everything is that whole world is in their trap, but it literally kills them. So that particular quotation is very suitable here. The drugs thrill but kill. In a long way, that drugs will kill you. So it is now time for every individual to spread the awareness among the youth, among all type of persons, whether aged persons or young persons or the children's one. We must have the responsibility to spread the awareness, to tell them about the negative effect of these drug addictions. As we know, the younger generation is easily vulnerable to these type of drug addictions because they can be easily lured to the drugs just for their excitement, for curiosity, because your friends can say you, please take it once time, it's a very beautiful thing, everything is that, why are you not taking that particular drug? But you always have self confidence, you have never come in these type of talks, so that can only be accepted by the youth or our younger generation if we take some steps, particular steps. We give some awareness program for them. We produce, we conduct some awareness program for them at the school to college to university levels, in our society, in different mohallas, colonies, in different states, everywhere. If we conduct these program on day-to-day basis, then only and then it is possible. जैसे आप जानते हैं ना कि अगर आप पत्थर के ऊपर भी अगर रस्सी को आप स्क्रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ जाता है. तो सिमिलरली when we conduct all these awareness program about regarding the drug addiction on day to day basis,
in front of all our youths, all our small childrens, then surely our talks, our programs will give a good impression on their mind that drug is not a good thing. Drug thrills but kills. कि one day these drug will kill you. वो आपको मार देगी. एक बार आपकी बॉडी में थ्रिलनेस तो आएगी, आपको कुछ नया तो दिखेगा, लेकिन फाइनली दैट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर यू. क्योंकि जब भी हम ड्रग लेते हैं तो जो पीयर ग्रुप होता है, जिस ग्रुप में आप रहते हैं, डिफरेंट पीपल्स व्हेन दे आर स्टडिंग और डूइंग जॉब एनीथिंग, so there always be a particular peer group when where they are studying or the working. That peer group will surely affect them. If that particular peer group is very knowledgeable about that particular drug addiction, then you will be safe there. If in your peer group there are different type of peoples which are already been addicted with the drugs, then for how much time you can be able to keep themselves away from that particular drug addicted peer groups. So if you have full confidence, या तो आप उनके अनुसार हो जाएंगे या आप उनको बदल देंगे, but it is very difficult कि आप उनको बदल पाए. It takes very longer time because they are already been addicted with that particular drugs. So there are different centers which are being opened by the government at different district, state or the national level. सरकार ने भी डिफरेंट सेंटर खोल रखे हैं ऐसे पर्सन्स के लिए, ताकि उनको पर्टिकुलर उनके लिए प्रोग्राम चलाए जाएं, किस तरह से उनको यानी ड्रग्स उनकी छुटवाई जाए. फाइंडिंग वेज टू रिलैक्स. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो डिफरेंट पीपल्स होते हैं जो ड्रग्स लेते हैं, जो ड्रग के एडिक्टेड हो चुके हैं, वो क्या करते हैं? दे बिलीविंग इन फॉल्स एनकरेजमेंट बाय द फेक फ्रेंड्स, चूजिंग फ्रेंड वाइसली. मतलब सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए वो ड्रग्स को लेते हैं, तो आपको उनके चुंगल में नहीं आना. आपको अपने जो फ्रेंड्स बनाने हैं, चूज योर फ्रेंड्स वेरी वाइसली, कि दैट फ्रेंड इज वेरी पर्टिकुलर फॉर देम. वो आपको गुड एडवाइस देगा. आपको अपने फ्रेंड को वाइजली चूज करना है. आपको सभी की बातें सुननी है, आपको किसी से फाइट नहीं करना, आपको उनकी बातें सुननी है, लेकिन आपको अपने दिमाग से काम करना है. नॉट अवेयर ऑफ ड्रग्स. जो ड्रग्स के प्रति अवेयर नहीं है, उनको पता ही नहीं कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ टेकिंग दैट पर्टिकुलर ड्रग्स. Not making trust on your family. For example, I am giving a lecture in front of you about that particular drug addiction. I am talking about that particular drug addiction is not a good thing. तो ये जो बात हम बता रहे हैं, similarly your parents are saying you that drug addiction is not a good thing. But when you get entangled in a particular peer groups which are already been addicted for particular drugs or the alcoholism, तो फिर उस वक्त आप अपने पेरेंट्स के ऊपर विश्वास नहीं करते, आप अपने टीचर्स के ऊपर विश्वास नहीं करते कि दैट पर्टिकुलर थिंग इज नॉट गुड वन. आप उनके चुंगल में फंस जाते हैं, जो आपका पीयर ग्रुप है. जब वो आपको कहते हैं कि देखो लेके देखो मजा आएगा, बीड़ी सिगरेट पी के देखें आपको मजा आएगा, आप कैफीन लेके देखें आपको मजा आएगा, और एक अलग ही रिलैक्सेशन आपको महसूस होगी. तो शुरू में. और दूसरी चीज होती है शोशेबाजी, दूसरे को शो करना. आप अपना मोरल डाउन ना करें. आप ये ना सोचें कि आप इस सोसाइटी में उनके साथ रहेंगे तो वो डेली आपको टोकेंगे. जो ड्रग एडिक्टेड होते हैं, वो आपको के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं उस एरिया में जब आप रहेंगे उनके साथ. लेकिन इफ यू हैव इफ यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट, इफ यू आर फुली ट्रस्टिंग ऑन योर फैमिली, ऑन योर टीचर्स, ऑन योर एल्डर्स वन, तो फिर आप उनके चुंगल में नहीं फंस पाएंगे. धीरे धीरे उनको पता चल जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, आप इनको इसको कितना भी कुछ कह लें, ये आपकी बात मानने वाला नहीं है. यही जो भावना है, जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस था, जो आपने ट्रस्ट किया अपनी फैमिली के ऊपर, अपने बड़ों के ऊपर, यही जो अवेयरनेस है, यही जो चीज है, यही आपको सभी के अंदर क्रिएट करनी है, पैदा करनी है. अपने और साथियों के अंदर भी आपको ये क्रिएट करनी है, उनको अवेयर करना है कि ड्रग एडिक्शन, एल्कोहलिज्म, ड्रग
ये सारी चीजें अच्छी नहीं हैं उनकी हेल्थ के लिए, क्योंकि उससे पूरी सोसाइटी इफेक्ट हो जाती है, आपकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो वेरियस टाइप ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स हैं जो जनरली एडिक्शन की फॉर्म में लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल सिगरेट्स जिसके अंदर निकोटीन होता है, लिक्वर जो लोग एल्कोहलिज्म एल्कोहल ले लेते हैं, टी एंड कॉफी जो कैफीन लेते हैं वो भी एक एडिक्टेड है अगर आप एक लिमिट से ज्यादा ले लें। और जो डिफरेंट आपकी मेडिसिन भी है, अगर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आप लेते हैं, दैट इज गुड वन। बट इफ यू टेक एनी ऑफ द chemicals against the doctor prescription, like the different syrup, cough syrup we generally see in the different areas when we are going near the any park or another area, you will see the large number of the small bottles, cough syrup bottles been spreading there. That only due to that these type of youth person which get entangled, get trapped by these ड्रग एडिक्टेड पर्सन्स। जैसे कि हम जानते हैं कि जो निकोटीन, एल्कोहलिज्म, कैफीन, these all called is the physiological effect, but drugs causes the psychological effect too, hence are more addictive. Addiction is a disease. एडिक्शन भी क्या है, एक डिजीज है। जिसको इसकी आदत हो गई, इट मीन्स उसको कोई ना कोई बीमारी हो गई है, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, उसको डिजीज है। डिजीज में भी द मेंटल वन, मेंटल डिजीज, दैट में भी द साइकोलॉजिकल डिजीज, दैट में भी द फिजिकल डिजीज। तो दैट इज ऑल्सो ए डिजीज, एडिक्शन इज ऑल्सो ए डिजीज। जो ये वल्नरेबिलिटी है जो फैली हुई है ड्रग एडिक्शन, एल्कोहलिज्म की, जिसने पूरी सोसाइटी को कंप्लीटली अफेक्ट कर दिया है, द वल्नरेबिलिटी of the modern society plays a catalytic role in prompting and consumption and abuse of narcotic and psychotropic drugs. आपने देखा है बड़ी बड़ी जो पार्टीज होती हैं डिफरेंट, जो हाई सोसाइटी की कह लो, वहां पर भी एक प्रचलन है कि वहां पे, यानी ऐसे चलता है जैसे वाटर पीते हैं ना, वाटर ड्रिंकिंग करते हैं, ऐसे ही वहां पे अल्कोहलिज्म चलता है। ये वहां की तो बात, वो एक शोशेबाजी में होती है, वो महंगी ड्रिंक्स लेते हैं। इवन किसी भी आप ग्रुप के अंदर देख लें, चाहे वो ज्यादा कमाने वाला ग्रुप है, लो इनकम ग्रुप हो चाहे, या हाई इनकम ग्रुप्स हो, हर इनकम ग्रुप्स के अंदर ये जो लत है ये बड़ी ही बेकार है। कुछ लोग क्या करते हैं कि आई एम टेकिंग दैट ड्रिंक्स, मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं परेशान हूं। सो दैट इज नॉट द वे। क्या परेशान है तो आप ड्रग्स ले लेंगे? आप परेशान हैं तो आप फ्रूट्स क्यों नहीं खाते? आप परेशान हैं तो आप मिल्क क्यों नहीं पीते? और फिर कहते हैं कि मैं परेशान था, फिर किसी हो को कुछ हो बोल देंगे, सुना देंगे, गलत हरकतें कर देंगे, फिर कहेंगे मुझे तो पता ही नहीं था। हर बंदे को सब कुछ पता होता है, दे हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट दैट थिंग, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर सेइंग। सिर्फ इसकी छाप अपने ऊपर लगा लेते हैं, बिकॉज दैट रीजन मैंने ऐसा कर दिया। तो हमें अपनी सोसाइटी को इन सारी चीजों से, जो कंजप्शन बढ़ रही है ड्रग्स की, एल्कोहलिज्म की अपनी सोसाइटी के अंदर, हमें उसको रोकना होगा। हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी काफी स्टेप्स उठाती है, काफी स्टेट के अंदर कंप्लीट रोक दिया जाता है एल्कोहलिज्म को, ड्रग्स को बैन कर दिया जाता है। उसके बाद कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स आते हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं, इस वेल डूइंग वर्क के अगेंस्ट होते हैं, उसके लिए फिर वो उस चीज की ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर आर सम पर्सन इन द गवर्नमेंट विच वांट्स दैट everything should be good, our society must go up high in terms of their development, so we must have to stop that intake of that drugs or the alcoholism. लेकिन what percent of peoples are doing that particular work? अकेली गवर्नमेंट के करने से ये काम नहीं चलता। गवर्नमेंट पॉलिसीज बना सकती है ड्रग एडिक्शन के अगेंस्ट, एल्कोहलिज्म के अगेंस्ट, लेकिन जब तक हमारी पूरी सोसाइटी, हम एकजुट नहीं होंगे, हम इकट्ठे नहीं होंगे, हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, हम आपस में ही एक दूसरे को नहीं टोकेंगे, नहीं रोकेंगे इस चीज के खिलाफ कि व्हाई यू आर टेकिंग ड्रग्स, व्हाई आर यू टेकिंग एल्कोहलिज्म, व्हाई यू आर टेकिंग एल्कोहल, तो तब तक इसका कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। These days, not only narcotics but pharmaceutical drugs are also used by the drug addicts। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि काफी कफ सिरप होती है वो लेते हैं, और भी काफी सारी ड्रग्स हैं
जो ली जाती हैं और उसके फिर पर्टिकुलर जो पर्सन है वो एडिक्ट हो जाते हैं, उनकी हैबिट में वो चीज शामिल हो जाती है, फिर वो उसको छोड़ ही नहीं सकते। जैसे स्लीपिंग ड्रग्स, किसी बंदे को नींद नहीं आ रही, वो किसी टेंशन में है तो स्लीपिंग ड्रग्स ले लेते हैं। न्यूरोलॉजिकल जो एक्टिव ड्रग्स होती हैं उनको लेना शुरू कर देते हैं। कफ सिरप को लार्ज अमाउंट में ले लेते हैं, पूरी की पूरी बोतल को वन टाइम पी जाते हैं सिर्फ नशे के लिए। जो वेरियस कैटेगरी ऑफ जो ड्रग्स हैं, लाइक डिप्रेसेंट्स ओपियम फैमिली से हैं, स्टिमुलेंट कोकेन फैमिली से हैं, हेलुसिनोजन हेलो हेलुनो हेलुसिनोजेंस क्या होती हैं? ये वो ड्रग्स होती है जिसमें आप एक कहां पे चले जाते हैं, एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं जाके। कैनाबिस फैमिली से है ये। एंड वेरियस सिंथेटिक ड्रग्स विच कॉजेज डैमेज टू द माइंड एंड आवर बॉडी आल्सो। दूसरे टाइप का आपने देखा होगा, इतने ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं, अपने फिल्म सिटी में देखा होगा, अपने डिफरेंट पिक्चर्स में देखा होगा। जो डिफरेंट पिक्चर्स भी जो बनती हैं वो किस लिए बनती है? हमें कुछ वैल्यूज देने के लिए बनती है। आपने देखा हो डिफरेंट पिक्चर्स के अंदर शुरू में दिखाते हैं वो ड्रग एडिक्शन है, लास्ट में वो हमें एक सीख दे के जाती है कि देखो किस टाइप से वो जो बंदा है उसका जो फैमिली है, उस पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई, उसकी वजह से और कितनी फैमिलीज भी डिस्ट्रॉय हो गई। तो हमेशा ही जब भी ऐसी फिल्म्स बनती हैं तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे ब्रेन के ऊपर छोड़ के जाती है। लेकिन हम उसको एक्सेप्ट करें ना करें वो तो हमारे ऊपर डिपेंड है। इसलिए मैंने कहा ना कि कोई भी चीज को हम किसी भी पर्सन को एक दिन में नहीं सिखा सकते हैं। डे बाय डे अवेयरनेस लेक्चर करवाने होंगे। आपने देखा है कि गवर्नमेंट ने भी डे बाय डे बेसिस के ऊपर अवेयरनेस जो लेक्चर हैं वो स्टार्ट कर रखे हैं। उसके लिए डिफरेंट इंसेंटिव्स भी गवर्नमेंट देती है, डिफरेंट अवार्ड्स भी गवर्नमेंट देती है कि कौन कौन पर्सन ऐसे हैं, कौन सोसाइटी ऐसी है जो कंटिन्यूअसली 24/7 आवर्स कंटिन्यूअसली ड्रग एडिक्शन के खिलाफ वर्क कर रही है, और उसका इम्पैक्ट कितना हुआ सोसाइटी के ऊपर, यानी क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट उन्होंने डाला, उस वर्क से क्या फायदा मिला। अगर सभी उसी काम में जुट जाते हैं तो फिर तभी हमारी जो ये समस्या है, ये जो प्रॉब्लम है ड्रग एडिक्शन एल्कोहलिज्म की, उससे हमें छुटकारा मिल सकता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रग सिंथेटिक ड्रग्स एंड द इंट्रावेनस ड्रग्स, देखो थ्रू इंजेक्शन भी लेते हैं। आपने देखा ना कि अगर हम टेबलेट थ्रू माउथ ओरल लेते हैं तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर कुछ समय लगता है, लेकिन डायरेक्टली ही, क्योंकि ड्रग्स जो हम लेंगे वो बॉडी में जाएगी, सोलबिलाइज होगी, फिर वो ब्लड के अंदर मिक्सअप होती है, फिर उसका असर दिखता है। डायरेक्ट ही ड्रग के अंदर ले डायरेक्ट ही ब्लड वेसल्स में इंजेक्शन के थ्रू ड्रग्स को लोग ले लेते हैं। तो जिसकी वजह से उनके जो आदत है वो इतनी ज्यादा हो चुकी होती है कि देखो बार बार ड्रग्स, जैसे आपको यहाँ पे स्लाइड के अंदर दिखा रखा है, तो जिसकी वजह से काफी डिजीजेस भी हो जाती हैं, क्योंकि वो इंजेक्शन एक को एक पर्सन लगा रहा है, उसके साथ उसकी एक ग्रुप है जो ऐसा काम करता है, तो उसी इंजेक्शन से दूसरा लगा रहा है, तीसरा लगा रहा है, तो जिसकी वजह से उनके अंदर ये डिफरेंट डिजीज, HIV, एड्स, ये फैलने के भी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। देयर आर सेवरल केस स्टडीज ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स एंड हाउ द एडिक्शन ruins देयर लाइव्स। आप देखें, मनी प्रॉब्लम आ जाती है जब वो क्या करेंगे, घर में मनी प्रॉब्लम कैसे आएगी? क्योंकि उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या चाहिए? ड्रग्स। ड्रग्स तो कोई सस्ती तो आती नहीं जो वो लेते हैं। अफीम, गांजा, चरस जब लेंगे तो काफी महंगी ड्रग्स आती हैं। तो क्या करेंगे? वो चोर बन जाएंगे, थीफ बन जाएंगे अपने ही घर में, किसी दूसरे के घर से भी। वो चोरी करने की आदत उनमें हो जाएगी, तो चोरी करेंगे घर से तो क्या होगा? घर में मनी प्रॉब्लम्स आएगी, जिसकी वजह से जो नॉर्मल जो थिंग्स हैं, जो घर की डेली नेसेसिटी है, फिर वो कहां से आएंगी? सो देयर विल occur द many problem due to the buying of these type of drugs by that particular drug addicted persons। तो जिसकी वजह से वो जो पर्सन है वो अब ऑनेस्ट नहीं रहेगा, वो डिसऑनेस्टी उसके अंदर क्रिएट हो जाती है, क्योंकि हर पल वो झूठ बोलेगा, वो लायर बन जाएगा, झूठा बन जाएगा। हर चीज में उसको झूठ बोलना पड़ेगा कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने चोरी नहीं की, मैंने पैसे वहां से नहीं लिए। तो उसके अंदर एक डिसऑनेस्टी आ जाती है। अगर वो कहीं पे वर्क प्लेस के ऊपर काम करता है, जो भी करता है, तो वो अपनी परफॉर्मेंस उसकी बेटर नहीं होगी, वेदर इट इज वर्किंग एट ए स्कूल और कॉलेज और अदर एनी इंडस्ट्री, anywhere, their performance now becomes poorer and poorer. So these are the different effects. So harmful use of the alcohol can cause the serious social
and the economical consequences, as already we are talking about that, for the individuals, family and the society as a whole. ड्रग ओवरडोज में इवन कोज द डेथ, जिससे फाइनली डेथ भी हो जाती है। तो ड्रग्स जो हम लेते हैं उसके काफी एडवर्स इम्पैक्ट तो देखो पूरी सोसाइटी के ऊपर, पूरी फैमिली के ऊपर तो होंगे ही। यानी वो क्या करते हैं, पीटते भी अपने बच्चों को। पार्टिकुलरली जो वुमेन है उसकी हरासमेंट भी होती है, उसके चिल्ड्रंस की हरासमेंट होती है ड्यू टू दीज ड्रग एडिक्टेड पर्सन इन एनी ऑफ द फैमिली। अगर हम इनके शॉर्ट टर्म इफेक्ट देखें ड्रग एब्यूज के, सो दीज आर दी these drugs causes the change in their heartbeat, change in their BP, blood pressure, heart attack chances, stroke chances, psychosis, change in the appetite. These are the short term effect of the drug abuse. The long term abuse effects are the heart disease, lung disease, cancer, AIDS, hepatitis. These are the long term effect. These are the long term effects of drug abuse. The negative impact of the drug abuse are increase in the diseases like the HIV, hepatitis B or the C, tuberculosis. The drug abuse causes increase in the violence in the whole society, in their home, at the workplace. The economical potential get wasted because most of the money they are going to waste on purchasing of these drugs or the alcohols. Due to intake of that drugs, their relationship with their family, with their friends get affected, adversely affected, creating emotional and the social problem. That increases the financial burden on whole of the family, and mainly the woman faces the domestic violence due to these drug addicted persons. That causes the imbalance on whole of the family. Whole of the family get disturbed, whole of the society get disturbed, going to disturbed, already disturbed. So it's our responsibility to protect whole of the family or the society or the nation, because you can see these are different type of negative impacts that going to occurs, already occurring in the society due to drug abusing, due to the alcoholism. So there is a urgent need to provide a whole range of community based service programs for the identification, for the counseling and the de-addiction of the addicts which are already been addicted, along with their aftercare and rehabilitations. Law enforcement agencies should be sensitized to the need of victims of the substance abuse to enable them to rehabilitated and reintegrated in the whole of the society. The employers need to implement an effective alcohol and the drug prevention program at the workplace. It doesn't mean that already there is no program in different schools or the offices. We are conducting these different programs, but we have to increase the conduction of these programs at very regular basis. If we make that particular program even one time in a day, just for 15 or the 20 minutes at any time, at the early in the morning, before the starting of the colleges or the schools. जैसे आपने देखा था कि पहले स्कूल्स के अंदर जो प्रेयर होती थी, प्रेयर के दौरान कुछ मोरल लेक्चर दिया जाता था। सिमिलरली किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जब वो इंस्टीट्यूशन जब स्टार्ट होती है वर्क प्लेस के ऊपर, तो अगर ये कर दिया जाए कि हर किसी पर्सन को, किसी भी पर्सन को डेली ड्यूटीज लगा दी जाए। मान लीजिए किसी ऑफिस में टोटल 20 पर्सन है, किसी में 30 है, किसी में 200 तक भी है, 300 तक भी है। डेली वन पर्सन की ड्यूटी लगा दी जाए कि उसको एक लेक्चर देना ही है, जस्ट फॉर द 10 मिनट्स। तो उससे क्या होगा, एवरी पर्सन गेट सेंसिटाइज्ड विद दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ द ड्रग एडिक्शन और द अल्कोहलिज्म। क्योंकि जब वो लेक्चर देगा, हम उसको कहेंगे भाई हर किसी को देना है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो वहां पे तो अच्छी अच्छी बातें बोले और खुद उस चीज को फिर यूज करे। तो इसका इम्पैक्ट होगा, किसी ना किसी दिन उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर होगा। हम सभी के कंबाइंड एफर्ट से ही ऐसा हो सकता है। टेकिंग और पोजेसिंग एनी काइंड ऑफ ड्रग्स इन एनी अमाउंट, दैट इज ए क्राइम, and that may leads to imprisonment
for a minimum of 10 years and maximum of 20 years. So it is necessary to all of us say no to drugs. Say no to drugs. In December 1987, the United Nations General Assembly decided to observe 26th June as the International Day Against Drug Abuse and the Illicit Trafficking. It is an international campaign because it is not a problem of the single country, because different zones which are spreading their tentacles in all the countries, all been affected, all countries been affected. So it must be the combined effort at the international level. So it is an international campaign to strengthen action and cooperation to achieve the goal of international society free of drug abuse, free of alcoholism abuse. So by understanding the need and the importance of having the addiction-free society, in the Article 47 of our Indian Constitution, that is a statement here, I am quoting it here, the state shall endeavor to bring about prohibition of the consumption, except for medicinal purposes, of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to the health. That is under Article 47 of Indian Constitution. The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 was enacted and empowers the government to establish centers for the prevention and the treatment of drug addiction. The government of India, as we are already talking about all these, the government of the India has already started conferring national awards to institutions and individuals who have made outstanding efforts such as awareness generation, research, rehabilitation to address the problems of alcoholism and drug abuse. So we must have to salute all these persons we already been awarded with these national awards for their outstanding services in the field of prevention of alcoholism and substance drug abuse. We must salute them. We must salute them. We must also salute to the Ministry of Social Justice and the Empowerment for motivating peoples to work towards making the society addiction free. So it aims at providing a whole range of services, including awareness generation, identification, treatment, and rehabilitation of addicts through de-addiction and rehabilitation center, as we have already tell about all these things, through National Action Plan for Drug Demand Reduction, which was initiated in 2018, focuses on awareness generation, capacity building, rehabilitation, and specific intervention in vulnerable areas and ensure drug demand reduction by 2023. There is also a website for the Nasha Mukt Bharat Abhiyan NMBA on the occasion of International Day Against the Drug Abuse and Illicit Trafficking was launched on 26 June 2021 for the worldwide strengthening of this action plan and achieving the goal of sustainable world free of substance abuse. Substance here is drug abuse, alcohol abuse. There are many NGOs which have already been actively involved in the implementation of the drug-free Indian campaign. Outreach workers of these institution organizations educate the people about this all effect of the drug abuse by visiting door to door, village to village, nearby all localities in different districts or the states to assist in the rehabilitation of the victim of that particular substance abuse. And these are different NGOs, these are different persons photos, these are only the few one, but there are large number of peoples, large number of NGOs which are doing work actively in that particular direction for implementation of that drug free India campaign. Narcotic trade is a very great threat to whole of the society, for the security of the country, for the safety of the country. The narcotics trade is one of the biggest source of income for the terrorists and anti-national elements.
and the money sourced by these elements through drug trade is used to destabilize the nation. We must have to understand the meaning of that. If the drug addiction is continuously been there in any of the country, that will increase the terrorism in our country, that will cause the destabilization in our country. So who wants their country get destabilized? क्या कोई चाहेगा कि उसकी कंट्री डिस्टेबलाइज हो जाए? नहीं, कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि हम चाहते भी नहीं कि हमारी कंट्री डिस्टेबलाइज हो। हम ये काम भी नहीं करना चाहते ड्रग एब्यूज के खिलाफ, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री डिस्टेबलाइज ना हो, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट अच्छी हो, तो हमें ड्रग एब्यूज के खिलाफ अपनी आवाज उठानी ही होगी। हमें डिफरेंट जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं, हमको उनमें एक्टिवली इन्वॉल्व होना ही होगा। हमें इस टाइप के डिफरेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने ही होंगे। हमें डिफरेंट अवेयरनेस लेक्चर्स के थ्रू स्टेप बाय स्टेप, डोर बाय डोर जाके स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर हमें डिफरेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने ही होंगे, ताकि हम अपने कंट्री को एक बूस्टअप दे सकें टुवर्ड्स देयर डेवलपमेंट, और अपनी जो कंट्री है इंडिया, ताकि हम उसको एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर कन्वर्ट कर सके, वहां तक हम उसको पहुंचा सके। We all of us come forward to join hand together to help people already been suffering from alcoholism and the drug addiction. हमें जो पहले से एडिक्ट हो चुके हैं, उनको इस बीमारी से बाहर निकालना है। बिकॉज मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ड्रग एडिक्शन इज ए डिजीज। हमें ड्रग एडिक्शन की जो डिजीज है उससे उनको बाहर निकालना है। एल्कोहलिज्म की जो डिजीज है उससे उसको बाहर निकालना है। साथ ही साथ जो अभी तक बचे हुए हैं उस ड्रग एडिक्शन से, उनको ड्रग एडिक्ट होने से रोकना है। सो वी हैव टू साइमल्टेनियस वर्क, कि अभी तक जो ड्रग एडिक्टेड के चुंगल में नहीं आए हैं उनको रोकना है, और जो ऑलरेडी ड्रग एडिक्टेड हो चुके हैं, अल्कोहलिज्म के एडिक्टेड हो चुके हैं, तो उनको इससे बाहर निकालना है। So for all that, we all of us come forward and join hands together to help the peoples suffering from alcoholism and the drug addiction. All of us must contribute to prevent and reduce the damage caused by the problem of alcoholism and drug abuse, to move ahead towards a healthier and the happier society. All of us must appreciate the work of national awardees. I am saying again, we all of must appreciate. Everyone wants something appreciation, so we must all appreciate the work of these national awardees for their continuous efforts towards this noble cause for the healthy country, and commend the efforts of the Ministry of Social Justice and Empowerment in this direction. हम अपने इसी प्रोग्राम के माध्यम से हम सभी को, जितने नेशनल अवार्डीज हैं, अपनी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को, और जितनी भी और एजेंसीज जो ड्रग एडिक्शन के खिलाफ वर्क कर रही है, हम सभी जो पार्टिसिपेंट हैं हमारे इस प्रोग्राम के अंदर, जितने रिसोर्स पर्सन और भी हैं, हम सभी उन पर्सन्स को, सारे नेशनल अवार्डीज को, और जिन्होंने अभी अवार्ड नहीं लिया है और जो अभी इसकी तरफ नॉन स्टॉप 24/7 वर्क कर रहे हैं, हम उन सभी को सैल्यूट करते हैं। All of us collectively says no to drugs. We must all have to say no to drugs for a healthy life, a healthy family, a healthy nation, for a better future, for the safety and the security of the nation. We can bring the drug addicted youth to the path of rehabilitation only through conversations, through counseling, and through continued love and the support. So thank you. That all about today's session. So we must all have to come together to fight against that particular disease, that is the drug addiction is a disease, alcoholism is a disease. So we must all have to come together for the betterment of the nation. Thank you very much.